नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर एक बार फिर से आपका टेक टॉक्स के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे एपिसोड्स कंसर्न रखते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी साइबर सिक्योरिटी से, और हम लोग यहां कोशिश करते हैं कि ऐसे साइबर एक्सपर्ट्स को आपसे हर हफ्ते मिलाएं ताकि आपका जो साइबर वर्ल्ड है, आपका जो डिजिटल वर्ल्ड है, वो आपके लिए एक सिक्योर जोन बनता जाए। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज जिस एक्सपर्ट को हम लोगों ने बुलाया है वो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। आज हमारे साथ वो हैदराबाद से ही जुड़ने वाले हैं और डिजिटल ट्रैक उनकी कंपनी का नाम है, जो लोगों को रैंसमवेयर, मैलवेयर, फिशिंग और न जाने क्या क्या साइबर थ्रेट से आगाह कर रही है और बचा रही है। उनको मिलने से पहले लेकिन बहुत जरूरी बन जाता है हम लोग उनका स्वागत कर लें जो इस शो को बनाने वाले हैं, जिनकी वजह से हम आपके सामने हर हफ्ते आ पाते हैं। डॉक्टर नवीन धाम का हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर धाम ने हमें इस शो के लिए गाइडेंस ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट्स को भी जोड़ा जो हमारे इस शो को बहुत ही ज्यादा कीमती बना देते हैं, बहुत ही ज्यादा देखने लायक बना देते हैं। और हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्लाउड एक्सेस का भी, जिन्होंने अपने सामर्थ्य से हमारे इस शो को नवाजा और आज हम इस शो को बनाकर आपके सामने उपस्थित हो पाते हैं। डॉक्टर धाम की कंपनी का नाम है GISPL, जो कि साइबर सिक्योरिटीज के ऊपर कंसर्न रखती है और साथ ही में कंप्लायंसेस का पूरा ध्यान रखती है। यदि आपकी कंपनी में ऐसा कुछ थ्रेट है, आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं कहीं रैंसमवेयर जैसी कोई चीज को अंदर लेके आ सकते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज को एक बार ट्रेन करवा सकते हैं डॉक्टर धाम की टीम के द्वारा। और यदि आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई थ्रेट है जो इस समय आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, तब भी उनकी ऑडिटिंग टीम को आप अपने पास बुलाइए, उनसे उसको चेक करवाइए। क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी बहुत सिक्योर है। हमें ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म इस शो के साथ, इस शो के माध्यम से हम आप तक लेके आ पा रहे हैं। दोस्तों जुड़े रहिए, ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको मिलवाने वाला हूं हमारे हैदराबाद के एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार से। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सुनील जो हैं वो एक रैंसमवेयर एक्सपर्ट हैं, तो वहीं से शुरुआत करते हैं, बिकॉज रैंसमवेयर की चर्चा आजकल बहुत ज्यादा जोरों पर है। सुनील, आप किस तरीके से रैंसमवेयर की प्रोटेक्शंस देते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं लोगों को? Myself Sunil Kumar. I work as a SOC manager at Digital Brand. So I've been in cybersecurity for a decade now, and I have got certifications like CEH and CHFI under my belt. And so coming to the ransomware attack, imagine your home, one day find a lock on your door, okay, that you did not put there, okay, and a note saying that if you need to unlock your home, you need to pay something, okay. Similar to that, this is called a ransomware attack, but instead of your house, so it's on your computer or network or organization. So hacker use malicious software to block the access to your files, entire data system, and they demand ransomware to pay. Okay, so this is called like a ransomware attack. राइट। मैं आसान भाषा में अगर बताऊं तो यदि कभी ऐसा हो जाए कि आपको महसूस हो कि आप अपने एक हाई टेक होम के दरवाजे को खोल नहीं पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस दरवाजे की चाबी किसी और ने हथिया ली है। जी, यही एक रैंसमवेयर एक्सपर्ट या एक रैंसमवेयर एक्सपर्ट की राय के अनुसार यदि हम चलें तो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को और ज्यादा सेफ बना सकते हैं। कैसे, वो आज ये समझते हैं। Sunil, you just told us that a ransomware actually takes everything in control. So what exactly do you have in your arsenal to protect it? So actually it happens so the attacker will be sending some phishing mail. Okay. So sometimes they will be sending a phishing mails, so which look legitimate whenever they received by the employees. Okay. But it contains some dangerous links, okay, and attachments. So when you click on that links, so it will be installing a malware on the back end on your system, and it will lead to the access to the hackers. So this is what initially happened on a ransomware attack.
डॉक्टर धाम, जैसे सुनील ने अभी समझाया हमारे को कि एक फिशिंग मेल के जरिए वो एक मैलवेयर को डिप्लॉय करते हैं हमारे सिस्टम में, फिर वो एक कोड रिलीज करता है जो रैंसमवेयर का कोड हो सकता है। सो हम लोग इसको जड़ से बिल्कुल खत्म करना चाहें तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर इसको जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग है आपके एम्प्लॉयज की, जिनको आपको अवेयर करना है। तो जैसे कि एक फायरवॉल होती है, अब वो फायरवॉल के कंसेप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ह्यूमन फायरवॉल। तो ह्यूमंस को ही हमने फायरवॉल बनाना है ताकि वो ही इतने स्ट्रांग हो जाए कि कोई अटैक करना चाहे तो ना कर पाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द अटैक जो रैंसमवेयर अटैक्स हैं या कोई भी वायरस डाउनलोड हो रहा है आपके एनवायरनमेंट में, तो वो आपके एम्प्लॉयज़ की वजह से हो जाता है। तो डेलिबरेटली इनडायरेक्टली वो उस पर क्लिक कर देते हैं और वो वहाँ डाउनलोड होता है। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए फिशिंग सिमुलेटर्स बनाए गए हैं, जो कि फिशिंग सिमुलेशन हमने भी बनाया है, जिससे कि क्या होता है कि हम हैकर की तरह एक्ट करते हैं और हम उनको एक लिंक भेजते हैं। बहुत ही प्यारी सी मेल आती है उनको कि अमेजॉन का 50% डिस्काउंट चल रहा है होली का, तो यू क्लिक ऑन दिस एंड गेट योर वाउचर ऑन 50% कॉस्ट। तो वो टेम्पटिंग सी मेल होती है, उस पर क्लिक करता है, डाउनलोड जैसे ही वो करता है उसके सामने फंस जाता है। वहाँ हम उसको फिर स्क्रीन पे बता देते हैं कि दिस वाज अ सर्वे गोइंग ऑन फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट, सिंस यू हैव शेयर्ड योर इन्फॉर्मेशन, दिस वाज अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गेट योरसेल्फ ट्रेन्ड, अदरवाइज HR एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। अच्छा, ट्रेन की आपने बड़ी अच्छी बात की, तो ट्रेनिंग के दौरान क्या करते हैं आप उसको? ट्रेनिंग के दौरान हम उन्हें वीडियोस दिखाते हैं जो कि हमने बनाई हैं, जिसमें कि पूरी उनको फिशिंग के बारे में और अटैक्स के बारे में पूरा अवेयर किया जाता है कि अगर अटैक होता है तो कैसा होता है और क्या क्या आपको करना चाहिए ड्यूरिंग द अटैक, और उसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, उसको मिटिगेट कैसे करते हैं, वो पूरा उसमें ट्रेनिंग में बताया जाता है, ताकि जब वो उसको पूरी ट्रेनिंग कर लेता है तो ही बिकम फुली अवेयर। फिर ये होने के बाद हम दोबारा अटैक करते हैं, अच्छा, ये चेक करने के लिए कि एक्चुअल में वो ट्रेनिंग का कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ। जी, जी, जी। तो ये इससे हमें ये चेक हो जाता है। फिर हमारे जो सॉफ्टवेयर है, जो हमने सोल्यूशन बनाया है, उसके अंदर उसका रिकॉर्ड भी आ जाता है कि पहले हमें इतने लोग फिश हो गए, दूसरे अटेम्प्ट में इतने लोग ट्रेंड हुए और इतने कम फिशिंग अटैक्स हुए। तो उसमें हमें अवेयरनेस का इफेक्टिवनेस भी पता लग जाती है। बहुत खूब। दोस्तों, सुनील कुमार की कंपनी ने बहुत से रैंसमवेयर अटैक्स को बचाया, बहुत सी कंपनीज को बचाया, रैंसमवेयर अटैक होने से उनका डेटा बचाया, उनको रैंसम देने से बचाया, दोबारा से करेंगे, उनको रैंसम देने से बचाया। जानते हैं कैसे? कुछ इंटरेस्टिंग सी आपके पास कोई रियल टाइम सिनेरियो अगर आप डिस्कस करना चाहें हमारे व्यूअर से। Yes, thank you. So I want to show you how the attack starts and how the phishing mail lands and everything. So let me share my screen. So you can see here, so the employee using Gmail in their organization. So you can see here the subject of the mail is you need to update your PAN card immediately. Okay. So the mail is received from the SBI team. So many of the employees in the organization, so they will not see the mail where it is coming from. Means the email ID where it is actually coming from. So many of the people will see the display name and they will feel that it came from the SBI. Okay. And here you can see nowadays there is a growth of AI, artificial intelligence. So many of the attackers, they will be generating some content which looks similar to the bankers who will send to their customers. Okay. So same way, so we have generated the content using the ChatGPT, Kritin and Copilot from the Microsoft. So you can see here the content of the mail, and they are telling us to update the PAN card immediately by clicking on this link. So whenever we click on the link, so it will be redirected to the SBI. But here you can see most of the users will not see the URL where it is taking them. Okay. But here you can see, we can see the URL. It is a cyberattacks.dtsecop.cloud. Okay. The URL is different. But many of the employees will not observe the URL. Simply they will be clicking by seeing the web page. They will feel that it is a genuine page. And they will click on the links and they will enter the to the login. Okay. So here you can see username. So I am giving as a Times Now
and password as a times now. Okay, so this page is a phishing page. It is not a original page. So things you are entering here in the phishing page, so will be captured by the hacker who published this page. Okay, so we entered username as a times now and password as a times now. So let's see what will happen. So I am clicking on the login. So immediately it will show you some enter password. Okay, so some users might think that they have entered the wrong password, and again they will enter it. So now you can see the original page of the SBA. Okay, so it is redirecting to the original page. All right. Okay, so then attackers, so they will be using some tools on the back end. So they will capture, so here you can see the submitted data. So like this, the hackers will be capturing your user ID and password. So whenever you log into any phishing page. So can you just show us what the hacker may be gathering, the screen which the hacker may be seeing at this time? This is a tool using by the hacker on a back end. So whenever if you enter any details, so here you can see all the analytics of emails sent to the end users, how many has opened the email and how many has clicked the link and submitted the data. By taking the submitted data, they will misuse for other purposes. All right. So I was just asking you if you could just also show us any page from the dark web in which we get to know more about what the hackers may be seeing at this time. How the hackers collect our information. So what will happen is, so whenever you enter the data in the phishing pages, so those will be published in the darknet. Okay, so this is a darknet where I have connected using some onion networks like Tor browsers and other things. Okay, so this whatever I am showcasing you is only for awareness. Okay, so here you can see Lockbit 3.0 is a group of ransomware group. So they will be attacking the companies, and once if any user is compromised in the organization, okay, so they will be exfiltrating the data from the organization to their darknet. Okay, so here you can see, so once the organization is attacked by Lockbit 3.2 ransomware, okay, so they will be publishing the data here. Okay, so here you can see one of the domain has been targeted and they have been attacked and they have time. Okay, so before that need to pay some ransom. Okay, so here you can see some industries has been attacked and here they wanted to pay the in a Bitcoin. Okay, so if they are not paying the amount, so their data will be published like this. Right. सो दोस्तों ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इस समय अपनी हमारी मॉनिटर के ऊपर, ये स्क्रीन डार्क वेब की स्क्रीन है जो जैसे मान लीजिए किसी को हैक कर लिया गया है या फिर किसी को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया गया है, तो उसके सामने क्या मैसेजेस आएंगे और किस तरीके से उसकी रैंसम मनी जो है डिस्प्ले होगी, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैकर ने किस तरीके से प्लान किया होता है. सो मकसद आप लोगों को ये बताने का है, यहाँ आपने देखा होगा कि हमने एक कंपनी का नाम भी लिया. मकसद हमारा उस कंपनी को किसी भी दृश्य में दिखाना नहीं है. मकसद सिर्फ इतना है कि यदि किसी एक जेन्युइन कंपनी का नाम लेकर कुछ मेल भेजी जाती है तो वो कैसी दिखती होगी. कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमारे को जैसे सुनील ने समझाया दिखाया तो एक ऑथेंटिक नाम ही आगे रखना था ताकि आप अच्छे से समझ पाएं. जो भी स्क्रीन आपने यहाँ देखी केवल आपको समझाने के पर्पज से थी. हमारा किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पर किसी भी तरीके से पोर्ट्रे करने का नेगेटिव सेंस में या पॉजिटिव में हमारा उद्देश्य नहीं है. उद्देश्य और औचित्य केवल और केवल आपको सही चीज समझाने का है. तो हम आगे बढ़ते हैं. इस चर्चा को डॉक्टर धाम से भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. डॉक्टर धाम, आपने देखा बड़ी इंटरेस्टिंग सुनील ने हमारे को इन्फॉर्मेशन शेयर करी, कैसे फिशिंग के जरिए जो है डेटा लोगों को कब्जे में लिया जाता है, जैसे आप बता रहे थे ह्यूमन फायरवॉल के बारे में. पर यहाँ पर जब एक बार कंपनी कब्जे में आ जाती है तो कितना मुश्किल रहता है उससे छूटना, या फिर क्या उपाय हैं रैंसमवेयर ना देकर अपने जहां हम थे वहां से आगे शुरू किया जाए उसको. तो इसमें रैंसमवेयर में क्या होता है कि आपके सिस्टम को वो लॉक कर देता है, और लॉक करने के बाद अगर आपने अनलॉक करना है तो उसके लिए वो आपसे बिटकॉइंस
मांगते हैं हैकर्स, जो कि वो कहते हैं कि इतने बिटकॉइंस आप ट्रांसफर कर दो। जी। तो वो ट्रांसफर कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करने के बाद भी वो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डेटा नहीं देते हैं। अच्छा। तो इसके लिए रैंसमवेयर रिकवरीज होती हैं, जिससे कि रैंसमवेयर रिकवर करके हम उनको डेटा जो है उसको वापस ले आते हैं और उनको दे देते हैं, जिसकी कुछ कॉस्ट होती है विच दे हैव टू पे टू अस, विच इज ऑब्वियसली नॉट दैट कॉस्ट जो कि हैकर्स मांग रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स होते हैं रैंसमवेयर रिकवरीज के, जैसे हमारे पास भी एक्सपर्ट्स हैं जो रिकवर कर देते हैं डेटा और आपको दे देते हैं। कुछ केसेस में जो नए रैंसमवेयर आते हैं उसमें थोड़ा टफ हो जाता है रिकवर करना, बट 99% जो है वो रिकवर हो जाते हैं। सो दोस्तों, आज इस स्क्रीन के ऊपर आप दो एक्सपर्ट्स को देख रहे हैं जो कि आपको रैंसमवेयर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नवीन हमारे साथ तो बैठे हुए हैं और सुनील आप हैदराबाद से जुड़े हुए देख ही रहे हैं। सुनील, वंस द डेटा इज इन्फेक्टेड और वंस द डेटा हैज बीन अरेस्टेड बाय अ हैकर वाया रैंसमवेयर, what are the means by which you are actually protecting the client or taking them out of that web? Okay, so once the attacker get access to your data, okay, so first thing is, so they will keep a screen in your monitor that they need this ransom to be paid to the hackers. Okay, so at that time you should not pay the ransom. Why? Because paying encourages the criminals. Okay, so there is no assurance that you will regain the access to your data. Okay, instead of paying the ransomware, what you need to do is you need to back up your files regularly, and you need to keep the data, one copy in external hard drives and one copy in the cloud. Why? Because if your systems has been attacked and compromised, so still you have chance to restore the data from the external hard disk or external storages or from the cloud. Okay, so you should not always connect these backup devices to your network. Why? Because whenever if there is any attack is happening, so they might encrypt your backup also. Okay, so once you are backup your data, you need to remove from the network and you should keep it in an isolated state. So this remediation can quickly help the companies to recover the data. Okay, and whenever there is any ransomware attack, first you need to call to the cybersecurity professionals. So what it means, like they will be investigating like in a forensic way, that they will be finding the root cause of the attack. Okay, so you should not shut down any system. Only you need to remove the cables from your network. You should not shut down your system. Why? Because if you shut down your system, we cannot find the root cause. Why? Because whenever you shut down the system, again you switch it on, the data will be lost for the root cause analysis. Right. So experts like you are actually pinpointing the source of the ransomware, from where it has seeped into come into the system, right? राइट, ओके, ऑल राइट। सो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि फिशिंग एक ऐसा बहुत ज़्यादातर यूज़ किया जाने वाला तरीका होता है रैंसमवेयर के लिए, लेकिन बहुत से और तरीके हैं, जैसे कि अगर आपने कोई इन्फेक्टेड ड्राइव, यूएसबी ड्राइव को यूज़ कर लिया, यूएसबी पेन ड्राइव को यूज़ कर लिया, या फिर आपने किसी हार्ड डिस्क को यूज़ कर लिया, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स को जब आप एक सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वो अगर इन्फेक्टेड है तो आपका सिस्टम भी इन्फेक्ट हो सकता है। ये एक कॉमन नॉलेज है, लेकिन एट द सेम टाइम सुनील ने बात बताई हमारे को बैकअप रखने की, और खास तौर पे क्लाउड पे बैकअप रखने की। उसका महत्व एक बार जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो यही सलाह रोज दिन में पता नहीं कितनों को देते होंगे। सो बैकअप्स जो हैं वो एक टाइम के बाद तो नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आज सुबह रैंसमवेयर अटैक हुआ है, तो हमने पिछले रात का जो बैकअप लिया होगा, तो वो जो बैकअप जो लूज हो जाता है, डेटा हमारा लूज हो जाता है, उसको हम लोग किस तरीके से भरपाई कर पाते हैं, या फिर कैसे देखते हैं आप इस सिनेरियो को? क्लाइंट्स आपसे पूछते होंगे। बिल्कुल, देखिए इसमें दो तरह के बैकअप होते हैं। एक तो आप हर 24 घंटे में ले रहे हैं बैकअप, और एक ऑनलाइन बैकअप होता है जो कि साथ के साथ होता रहता है। अच्छा, रियल टाइम। ओके। तो रियल टाइम बैकअप जो होता है वो क्लाउड सर्विसेज कहीं ऐसी हैं जो कि उसको एनेबल करती हैं, जैसे क्लाउड एक्सेस भी है, उसमें जो है दे हैव अ रियल टाइम बैकअप ऑप्शन ऑल्सो। जी। सो वेयर इन
you cannot lose any data if there is any ransomware attack. तो हम यही उनको सलाह देते हैं कि ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास जाएं जो कि आपका रियल टाइम डेटा बैकअप कर रहे हैं. So, Sunil, we'd like to know more about your company now, because one aspect we have understood that you are into ransomware and ransomware protection. What other than that are you providing to the customers? Okay, so coming to Digital Track, Digital Track is company headquarters in Chennai. Okay, so it's a technology company that provides digital transformation solutions, like including consulting, artificial intelligence, networking, cloud management, and data management and system integration. Like we do have 1,000+ customers from all over Pan India and Middle East, and we do have 11 locations in Pan India and the Middle East. Yes, so actually, like we will be doing incident management. So for example, on a recent, I'm talking about the use case of a healthcare sector has been attacked by the Lockbit 3.4 ransomware. So immediately after the ransomware attack, we went to the customer location, and so we isolated all the machines in the network by disconnecting the cables in the network. And after that, we have not performed any shutdown in the network. And we collected the artifacts of the from the machines. Okay. So after that, what we did is so we have all the infected systems. We moved to the red zone, and after that, so we need to give a communication to the customer and the stakeholders, right? So for that, we have taken a rental laptops where we kept on the blue zone. And we have given only for the marketing and sales people to use that laptop to reply to the customers. And after that, we bought systems re-imaged the system, and we have allowed it onto the green zone. Okay. So after that, we have installed the EDR, XDR, and we have continuously monitored for the 3 months. And we have taken the artifacts of the system, right? So we have investigated how the attack came, and how the attacker came inside, and he was the attacker is being there in the network for almost 200 days. Okay, so as per the root cause, what we got to know is, so one of the user has been clicked on the phishing mail, and one malware has been installed in his system, and so he installed the keylogger. Okay, so whatever the passwords and everything he was typing on the system, right? So all that passwords has been captured by the attacker. And and he did a lateral movement, like how many systems are there in the network, and he got to know about all the system details. And so the main mistake organization will do is, so they will rename as if it is a CFO machine, they will rename as a CFO computer, CEO computer. So like that, the attacker get into that CFO machine, and he got all the financial details of the company, and he got all the personal details of the CEO. And then they have established the connectivity from their customer network to the darknet, and they have exfiltrated the data to the darknet. And then once it is completed, so they have created a malware in the organization, and they have went into the Active Directory. Why? Because all the systems are connected to the Active Directory, right? So they have created some PowerShell scripts. So on December 25th, 2023, okay, so they have sent all the script to all the machines, and they have enabled the ransomware. And after that, so they have leaked the data in the darknet. So this is what the use case. So I worked on the health sector. Okay, you just mentioned that it is not proper for anybody or any company to pay ransom, because that will bolster their their courage. But what exactly do you say, since they have the data already with them? So what do you say about that? Because it's also not very proper for the company's data to get published someplace on a public site. So what all measures do you say, or would you want to suggest? I'll repeat the question. So what all measures would you want to suggest to the people right now watching you? Okay. So the measures like organization need to take is, so they need to update regularly. Why? Because they need to keep their operating system, software, antivirus protection up to date to defend against the vulnerabilities. Okay. So we need to have the educate the people to be cautious with their emails. They should not click on the links or download the attachments from the unknown or suspicious email. Okay. They need to use the strong password. So as an organization, it's like we need to enable the strong passwords to all the employees.
password and stay protected. Consider like using a password manager. Organization need to use a password manager to their employees. Okay, and we need to conduct the cybersecurity awareness session to educate like the employees of the organization. Okay, so like we can teach them the tactics used by the cyber criminals, and we need to educate them like how the phishing mail look like, how the attachment, like we should not download the attachment like that. And after that, like we need to have the regular backups also. Like if we maintain the regular backups, like we can keep our data up to date, and whenever if any kind of ransomware attack happens, like immediately we can restore the data from the cloud or other external storages, and we can resume the operations immediately. सो दोस्तों ये सुनील ने जो इन्फॉर्मेशन दी है हमारे को बहुत काम की है। रैंसमवेयर कैसे ना आए ये तो हमने समझ लिया, रैंसमवेयर ना दिया जाए ये भी हम लोग जान चुके हैं, लेकिन कुछ कंपनीज को ये डर रहता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन क्योंकि पब्लिक हो जाएगी, तो उस इन्फॉर्मेशन से के डर की वजह से वो पब्लिक ना हो, इस डर की वजह से भी कुछ कंपनीज के मैनेजमेंट जो है सलाह देती है कि आप इनको पैसा दे दीजिए तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करेंगे। तो कंपनीज को लेकिन डरने की जरूरत नहीं है इस मामले में भी, ऐसा सुनील कुमार बता रहे हैं। आइए जानते हैं क्यों। तो एक्चुअली so whatever the data is there, right? So it is already getting published in the darknet. Okay. So before to that, we can take some precautions. Like there will be some dark web monitoring services. Okay. So for example, sunilkumar.com is a website. It is a very reputational company. Okay. So hackers, what they will do? Immediately they will create a fake websites like sunilkumar1.com, sunilkumarca.com, like that. They will create a fake website. So by these dark web services, what the benefit we will get is, so we can actually monitor the on a real-time dark web monitoring, and we can get down that sites. Okay, and after that, like Telegram is one of the channel where hackers will be communicating. Okay, so at that time we will be doing as a part of dark web monitoring services like Telegram search, Yahoo search, like Google dark web monitoring. So like that we can do a monitoring. Okay, and then if anything is going wrong for any organization, so we will alert them and we will get down that website is down, and social media, if any post has been posted, so that post also we can delete in the social media or in a Google or any other like surface web monitoring. वंडरफुल। सो सुनील जो हमारे को समझा रहे हैं वो ये कि इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिश हो भी जाती है, डार्क वेब में पब्लिश हो भी जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। टेक डाउन सर्विसेज आती हैं जो आपका डेटा उतारने का वायदा करती हैं। ऐसी सर्विसेज जो हैं डॉक्टर नवीन धाम भी देते हैं, सुनील कुमार भी देते हैं, हमारे ये साइबर एक्सपर्ट्स बहुत काम के हैं दोस्तों। इनके नंबर्स डेफिनेटली आप जरूर नोट कर लीजिए। सुनील कुमार के नंबर मैं यहाँ पर फ्लैश कर रहा हूँ, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नवीन धाम हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, साथी हैं, और उनके नंबर्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप इनसे भी सलाह ले सकते हैं। इनकी टीम आपको जल्द से जल्द हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ऑलरेडी बाध्य है। इसके साथ ही यदि आप ऑलरेडी एक ऐसे सिस्टम को फॉलो करना चाह रहे हैं जो कि बहुत सिक्योर है, तो उसके लिए क्लाउड एक्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसने ना सिर्फ अभी तक एक रेपुटेशन अर्न करी कि उसके ऊपर कोई रैंसमवेयर अटैक नहीं हो पाया, या फिर यूं कहे कि रैंसमवेयर अटैक अगर हुआ भी है तो डेटा का नुकसान उसने होने नहीं दिया, तो इसमें कोई बड़ी बोल नहीं है। तो क्लाउड एक्सेस को आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स मैं यहां पर दे रहा हूं। और यदि आपके पास कोई इंटरेस्टिंग साइबर रिलेटेड कोई टॉपिक है और आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स यहां दिए जा रहे हैं, आप हमारे को भी फोन कर सकते हैं और हमसे भी उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे साथ इस स्क्रीन पे जुड़ सकते हैं जैसे कि सुनील आज जुड़े। सुनील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को समय दिया अपना। एंड डॉक्टर धाम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हमारे को इतनी वैल्यूएबल एडवाइसेस देते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं इस एपिसोड का समापन करूंगा। अगले हफ्ते हम लोग फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे जरूर जुड़ेंगे। धन्यवाद।